From wrestling akhadas in Dangal to quietly stirring emotions in Photograph and bringing satire alive in Kathal, she's built a filmography that refuses to be boxed in. An actor who chooses nuance over noise, she's constantly reinventing what it means to be a leading woman today. Whether it's stepping into hosting, experimenting with unconventional roles like her upcoming negative turn in Sundar Poonam, or building a brand that goes beyond the screen, she's clearly playing the long game. And just when you think you figured her out, she surprises you again, be sharing screen space with Diljit Dosanjh, exploring layered stories like Mrs., or even introducing people to the calm ritual of matcha. Give it up for Sania Malhotra. Lovely, louder, hello. बहुत बहुत स्वागत है आपका. Please have a seat. और इससे पहले मार्केटिंग में कोई कमी ना रह जाए, और क्या, There we have the logo right in the ऐसा middle. कैसे पूरा डब्बा लेकर आई हूँ मैं मुंबई से. बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले एनडीटीवी के इस मंच पर. Thank you. और इससे पहले हम कॉन्वर्सेशन शुरू करें, आपके इंडस्ट्री में 10 साल पूरे हो रहे हैं, दशक. जी. Thank you. 2016 दंगल और आज 2026. Yes, in December I'll be completing 10 years in Bollywood. वो वाली सान्या और इस वाली सान्या में क्या फर्क है, क्या बदला है? A lot has changed. A lot. I don't know, I'm just much more sure about myself, my craft, confident, and cuter. A lot more gold as well. ओह हाँ. दिल्ली आई हूँ यार. Now also, you know, if we see your choices, of course, जैसे मैंने अपने intro link में भी सारी films का नाम लिया, वो सारी choices काफी rare हैं, right? जैसे कुछ साल पहले हम male actors में आयुष्मान खुराना के लिए बोलते थे कि वो जो pick करते हैं, that is offbeat, it's Right. different, it's not Bollywood per se. Right. Is that also somewhere a conscious choice that you are making, that मेरे को plain Jane करना ही नहीं है, मेरे को classic करना नहीं है, मेरे को कुछ rare करना, or is it just that only अलग exceptional scripts are coming to you? It's a mix of both. As an actor, I don't want to be, I don't know, I don't want to restrict myself or be in a box and be comfortable with doing things that I have already done. Something that excites me is experimenting with my roles, with my scripts. Hence, I have done films like Mrs., Patakha, Paglet, Dangal, and also because my first film, I think my debut was with Dangal, जिसमें बाल काट दिए, wrestling सीखी. So, क्योंकि debut ऐसा था तो मुझे लगता है कि it could also be a conditioning for me as an actor कि experiment करते रहो. तो वो है. And of course, I'm very, very blessed. I get really good scripts that I can not say no to. But do you now feel torn between, you know, audience's expectation and what you want to do? Because अब expectations बहुत ज़्यादा होगी कि जो सान्या मल्होत्रा touch करेंगी, it will be something unique. Now, do you carry that pressure now? No, there's no pressure as such. Not at all. I know that I'm not perfect. और कभी कभार हो सकता है कि मैं कुछ करूँ जो ना अच्छा लगे. तो कोई बात नहीं. क्या कर सकते हैं? Will it stop me from experimenting or taking risk? No, not at all. I am not afraid of failure. I'm not afraid of, I don't know, just... Not trying something new. Yeah, not trying something new. And of course, we've loved the look of Sundar Poonam, जो आपका वो look जो आप बिल्कुल lens में देती हैं, it's deadly, and I'm sure it is going to be much more layered than what we see. What all can you share about the project? I can only say right now I'm still filming for the film, and I think 10% ही हुआ है shoot, and this is a character that, you know, I usually gravitate towards characters that I naturally like, but she is someone that I like. I don't know if I can say I like her, but I don't know, she's layered. It's a type of character that I have never played ever, and I wanted to challenge myself. क्योंकि एक कुछ जो आप characters करते हो as an actor, you have to empathize with them. But it is tough to empathize with this character, I would say. That's it. Okay, I'm sure it's deadly. Yeah. Okay. हम बहुत ज़्यादा तो अभी of course इनसे नहीं सवाल कर सकते उस project के बारे में. But now let's also talk about your journey since we're celebrating 10 years of Sania Malhotra also. Now, you know,
पूरी जर्नी में आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे मेंटोर्स आए होंगे, बहुत सारे ऐसे फिगर्स आए होंगे जिससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा, स्पेशली इन द फिल्म इंडस्ट्री. वन पर्सन जिन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया आपने किसी एक्शन से और उनकी टीचिंग आपके साथ रह गई, एंड इट इज़ हियर till now as well. I mean, you've worked with Amir Khan, Shah Rukh Khan. So, you know, any one person who's taught you something that stayed with you? I did a film called Photograph with Nawazuddin Siddiqui, and उस फिल्म में मेरे साथ गीतांजलि कुलकर्णी थी, who played my house help in the film. I have learned a very important thing about acting from her, which is backstory. The first day of our readings together, because she was playing my house help, she got a sari to wear, bangles, payal, a playlist कि मैं as my character मैं क्या गाने सुनती होंगी, and she didn't even sit up, she was sitting down, she had like everything planned about her character, which kind of moved me क्योंकि मैं सिर्फ दंगल से, क्योंकि दंगल में ना wrestling helped us a lot to get into the character, that physicality and dialect, वो सब हमारा naturally हो रहा था. But in this one, because it was so emotionally heavy, this film, when I saw her, I was like, I need to do this too. And till date, I do it for all my characters. वो क्या गाना सुनते होंगे, वो क्या मतलब also scent is something really important to me. So all my characters have a different scent. So and there are times when I put a perfume and I feel like, say Meenakshi from Meenakshi Sundareshwar. अरे ये तो मीनू का परफ्यूम है, वैसा मतलब it takes me back. Even songs, the kind of music I listen to, it changes. I write like my characters. For Paglet, I used to write poems and I can't write anything. To be honest, my writing is, I don't think so it's comprehensible. It's comprehensible to me, पर कोई और पढ़ेगा तो बोलेगा कि ये क्या है. But as my character, if I used to write as Sandhya, it used to make sense. So I do that till date. So thanks to Gitanjali that I got inspired by her. Of course. And that shows, right? That comes through. Screen पर दिख जाता है. How many of you are from Delhi? Most of you. दिल्ली दी कुड़ी साढ़े नाल है. जब आप दिल्ली वापस आती हैं, सबसे पहली चीज क्या करती हैं? और एक चीज जो आज भी आपको दिल्ली से जुड़े हुए है. घर, नानी, मेरा घर in Gurgaon. I'm really looking forward to go home tonight. Love that you say Gurgaon and not Gurugram. Yeah, Gurugram. Will I get? No, it's fine. Am I in trouble? People who have like their emotional connection, they would always say Gurgaon and not Gurugram. मैं पड़पड़गंज से हूँ ना, मैं अभी तक निकली नहीं हूँ. मैं 12 साल पहले छोड़ के गई थी, पर मैं 12 साल पुरानी दिल्ली में रह गई हूँ, ऐसा लगता है मुझे. Yeah. So what's the first thing that you do when you enter Delhi? खाना. Of course. And where do you राजमा go? चावल. Had to be. घर के राजमा चावल. इतने easily impress हो गए यार तुम लोग. खाना बोलते ही सब excited हो गए. That's Delhi for you. Yeah. Food यार. राजमा चावल नहीं मिलते वहाँ अच्छे. पर अब मैं I have moved my parents from Gurugram to Mumbai. So I do get like good rajma chawal in Mumbai as well. But यहाँ के खाने की बात कुछ और है यार. राम लड्डू नहीं मिलते यहाँ. और मैं वहाँ कहीं राम लड्डू बोलूँ तो उनको समझ नहीं आता राम लड्डू क्या होता है. मूली नहीं, मूली जैसा मूली टेस्ट ही नहीं है. And chaat also, yaar. Yeah, I mean, nobody does also. chaat like Delhi. Chaat too, I agree. Or North. Now, you know, you also have stepped into entrepreneurship with Bree Matcha. ये of course कभी भी कोई सेलिब्रिटी अपना ब्रांड लेकर आता है तो एक ये बात जरूर जहन में आती है कि कितनी इन्वॉल्वमेंट उनकी होती होगी. So I want to ask it straight up. How much were you involved right from the word go, and how much participation do you have today as well? 3 साल पहले I used to be a huge coffee drinker. फिर मुझे ये रियलाइज हुआ कि कॉफी से तो बड़ी घबराहट हो रही है यार. बीपीआई हो रहा है. बीपीआई हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा था ना. आई रियली लाइक द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ कप ऑफ कॉफी इन द मॉर्निंग. सुबह सुबह उठे हैं, बैठे आराम से, स्लो मॉर्निंग, crushing the beans and all of that. And when I started feeling jittery after having coffee, I was like, गए मेरे तो सपने गए. मेरा तो मैं मॉर्निंग का क्या करूँ, गर्म पानी पीऊँ. And then a friend told me, why don't you switch to matcha? 3 साल पहले matcha, mind you, was not matcha what it is right now. It was nothing, like people didn't know about it. I started drinking matcha and I was like, wow, this feels so good. I did my research and I started converting all my friends, family members into matcha drinkers.
और मैं कोई बाहर जाता था या मैं खुद ट्रैवल करती थी तो आई यूज टू गेट गुड क्वालिटी matcha for myself. 2 years back, I was like, this whole process is too much. It's tedious. Why don't I start my own brand? I told my manager, Jinal, I want to start my own matcha business. And this girl was like, what is that? Nobody knew when I told the team that, listen, I'm telling you, matcha is going to be huge. And when it comes to Indian markets, blah, 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 I'm giving them a speech about matcha, that matcha has amino acid like L-theanine. That's the reason you don't feel jittery. It has caffeine and similar amount of caffeine than coffee, but it also has an amino acid called L-theanine, which relaxes you, which gives you a very focused energy flow. आप में से कितने लोग पहली बार माचा के बारे में सुन या समझ रहे हैं? अगर सिर्फ दो ही, बाकी सबको थोड़ी देर में matcha के ट्राई बारे में कराते हैं आपको, थोड़ी देर में ट्राई कराते हैं. favorite people ever, favorite audience. So I was telling them this, and then they said, we have never tried matcha. And then of course I made them matcha, and their first reaction was "Ugh." जो होता है usually लोगों का, but then they all switched to matcha, all of them, and I'm not even kidding. Swear to God, they all switched. They drink matcha every day and more than me. So 2 साल पहले ये हुआ. We got Asenza on board. They're my partners in Brie Matcha. We get our matcha from Kagoshima in Japan. We have ceremonial blend. We have everyday blend. We have a signature blend. We also have flavored matchas. We have strawberry matcha. If you never tried matcha, you can get the strawberry matcha or the lemongrass matcha if you want to take like छोटे steps towards matcha. Those are really good. And we are also launching new flavors very soon. Lovely. So आपने काफी अच्छी इंट्रोडक्शन दे दी है. Now can you also take us through the process of making matcha? Do you want me to hold mic for you? हाँ, I'll hold it. No, ऐसे- let me hold it for you. ठीक है. Okay, guys, what we are going to learn now is how to make matcha. So this is our matcha ceremonial kit that we sell on our website. It's also available on Amazon. Let me show you. We have our ceremonial matcha in this. We have a bamboo. Do you want to put it here? Yes. Why struggle? We have a bamboo whisk. We also have. देख a रहे हो कितने तरह के matcha- यंत्र निकल रहे हैं एक हाँ माचा यार। बनाने के लिए चाहिए होते हैं यार बर्तन. और मतलब कहलाने easy के way लिए भी है. माचा गर्ली. Easy way भी है, which I've got other stuff also to show you guys. Actually, you should make it in this because it's a process and kind of a mindful activity. पर अगर आपको ये लंबा process नहीं करना, there are छोटे ways also जिसमें मैं आपको सिखा सकती हूँ माचा बनाना. Okay, what's So the we have first step? You can use the table as well if you want. मुझे ये सब खोलना पड़ेगा, तो आप मुझे 2 मिनट दें, मुझे बैठ के बनाना पड़ेगा ये. Oh, I thought we were ready, but that's absolutely fine. Do you want to do this? We can skip it as well. Why? Oh, you want to do it, of course. Why not? Of course you want to do it. Meanwhile, let me also tell you that we were discussing Dangal, we were discussing, your brush with wrestling. There are world-level wrestlers amongst us as well, so give it up for them as well. Shujit ji, if you're here, I can't see you, Shujit ji. Hi. You can, guys, give it up for this gentleman here, world-level wrestler. He's the world #1, of course, sir. We'll of course hear from you as well in a short while. So, दंगल में बढ़िया लगी थी आपको, सान्या जी? कितने नंबर देंगे आप 10 में से इनकी रेसलिंग को? 10? माइक दो. Of course. कृपा शंकर सर ने हमें सिखाया था, जानते हो आप उनको? आपके भी कान टूटे हुए हैं. हाँ. अरे नहीं, दे हैव कॉलीफ्लावर ईयर. सच में कान टूट जाते हैं. आप कान दिखाओ ना सबको लग रहा है मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ. या because of the constant contact, it's a thing. It's actually a sign. कोई अच्छा रेसलर उसकी निशानी है ये कान टूटे होते हैं. तो कृपा शंकर सर ने हमें सिखाया था. तालियां हमारे रेसलर्स के लिए एंड ऑफ कोर्स उन एक्टर्स के लिए जो उनकी कहानी पर्दे पर लाते हैं. But you also think that, Sanya, while you are doing this, I'll keep asking you a question as well. अब आप कितना कुछ कर रही हैं, आप डांस भी करती हैं, एक्टिंग भी करती हैं, आप एंटरप्रेन्योर भी हैं. You think अब हवा जो है वो बदल रही है. इंटरव्यू के साथ साथ मैं माचा भी बना रही हूँ, मैं खाना भी बना सकती हूँ. बहुत ज्यादा मेहनत होगी आज. मल्टी टैलेंटेड. But you think हवा बदल रही है. You think now
nobody has to have like just one role, they can do multiple things. Yes, I think क्योंकि हाँ मतलब क्यों नहीं ऐसा नहीं है कि आप सबको मल्टीपल थिंग्स करने की ज़रूरत है पर अगर आपका कोई आपको मल्टीपल शौक है तो व्हाई नॉट इफ़ यू हैव द टाइम इफ़ यू हैव the means then why restrict yourself. Right. Okay, now what process are we on? What step are we on? तो हम अभी माचा को सीव कर रहे हैं. Okay. जो Is ये there a way step- we can project this footage on this screen? That'll be great, so the audience can also see what we are doing and what Yeah. we are up to. Only if we can. वैसे Okay, this is good, this is तुम्हारी रील में देखा था कि तुम्हें माचा बिल्कुल पसंद नहीं है. Sorry. तुमने कोई रील बनाई थी ना अबाउट माचा. हाँ, मैंने एक बार ट्राई की थी एक बार ट्राई और आखिरी बार ही ट्राई की थी. बट आज देखते हैं कि सान्या के हाथों की माचा जो है वो कैसी बनती है. माचा मचाएगी या नहीं? या मचाई यार इधर ना स्वीटनर नहीं है तुम्हारे लिए मुझे स्वीटनर की जरूरत पड़ेगी वरना तुम कभी नहीं कोई पियोगे बात नहीं, हम मीठी मीठी बातों से काम चला लेंगे. या वो स्वीटनर का काम कर लेगा. बातों का तो ये माहिर है एज वी ऑल नो. Okay, so आपने क्या किया अभी? You've just put like 1 spoon of this matcha. Yes, actually 2 to 3 grams of matcha I have Okay. in this bowl. I'm doing this for the very first time on stage. Somebody making matcha. Yes. That too a Bollywood actress making matcha for us. I mean, I love doesn't get matcha better यार than मैं अभी this. रूम में पी कर आई हूँ और आज मैंने बनाई अपने लिए कोकोनट वाटर matcha and this is such a perfect weather for matcha. कितनी गर्मी है बाहर. मैं आप सबको अगर मेरे पास और समय होता तो मैं अपनी फेवरेट रेसिपी सारी बना के आप सबको पिलाती बट अच्छा, अब ये हम क्या नहीं कर है? नहीं सकते. Are we going to stir This with is a bamboo whisk. Okay, we're going to whisk with this. Yes, I'm going to pour some hot water in it. देखो दोस्तों मैं बहुत क्लमजी हूँ और मैंने पानी नहीं गिराया तो मैं क्लमजी नहीं हूँ. तालियां, पानी ना गिराने के लिए तालियां गाइस. थैंक्स. सो या श्रीकांत मेरा वो हाँ इलेक्ट्रिक विस्क भी दे दो. थैंक यू. हाँ, थोड़ी टाइम की कमी है. अगर इलेक्ट्रिक विस्क मिल जाएगा तो दैट विल बी नाइस. या तो अभी हम इसको ऑफ कोर्स कोल्ड भी बना सकते हैं बट आप गरम वाला बना रही हैं इसको. मैं गरम आपको इसलिए करना पड़ता है दैट बिकॉज यू नीड टू ब्रू दिस माचा. Oh, अच्छा. Oh, just like coffee. It's not important. You can also whisk it in cold milk. Okay. There are some recipes where people use cold milk, but Got I it. prefer whisking So what it I'll in do hot is water. I'll also make some of you taste this, and especially those who have never tried matcha. Sir, can I have you, Sujit ji, please stage पर आ सकते हैं मेरे लिए, please, please. जोरदार तालियां इनके लिए. क्लमजी कोई और है, सान्या आप नहीं. ये मेरा नया नवेला नए नवेले विस्क को जो इन्होंने गिरा दिया है. बहुत बहुत माफी. ओके नाउ आप बताइए, आपने सबसे पहले तो सर के लिए जोरदार तालियां. Can I also get honey? मैं नहीं जाने वाली यार मुझे तो Guys, किसी sorry, चीज second. की कैन वी गेट सम हनी एज वेल? अभी तक हमने सिर्फ सुना ही था हीरोइंस डिमांडिंग होती हैं, हमने देख भी लिया है. ड्रामे नहीं खत्म हो रहे यहाँ पे. गाइस, कैन वी गेट हनी? सर, हैव यू हैड माचा बिफोर? इससे पहले आपने माचा पिया है? सुना है बस. सुना है ना? माचा तो आप अभी जो सान्या बनाएंगी वो माचा ट्राई करने के लिए रेडी है. मैं भी एक सिप वैसे- लूंगा, आप भी. रेसलर्स को आप ऐसे कॉफी वॉफी तो नहीं पीते होंगे ना? नहीं नहीं कॉफी पीते हैं. कॉफी पीते हो ना? एनर्जी के लिए. अगर आपको उसको स्विच करके अगर आप माचा पियोगे तो उसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं क्योंकि माचा में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और अमीनो एसिड्स हैं और आपको मजाक नहीं है ये हंसे जा रहे हैं. ब्रांड है मेरा. बोलना पड़ता है एंड आई एक्चुअली लव माचा यार. तो मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स हैं. आपको कॉफ़ी एनर्जी तो दे देती है पर उसमें अमीनो एसिड्स नहीं है तो आपको मैं ट्राई ज़रूर कराऊंगी. So we got honey as well. हर हर महादेव अच्छी लगे. अब आई थिंक बहुत ज्यादा बिल्डअप हो गया है. अब इट हैज टू बी रियली वेरी गुड सान्या. नो ऐसा तो प्रेशर. नहीं है कोई प्रेशर नहीं है मेरे पर. ठीक है दोस्तों. Okay, ठीक है. आप honest रहेंगे अपने- आई डोंट टेक एनी प्रेशर. सो आप ऑनेस्ट रहेंगे अपने फीडबैक के हाँ? साथ? बिल्कुल बिल्कुल. नहीं आधा ही दिया यार पूरा भी नहीं दिया. लेकिन इतना बढ़िया ब्रांड उन्होंने बनाया, वो क्या हनी हमें थोड़ी ना चखाएंगी? नहीं नहीं नहीं, आपको लग रहा है ये मुझे कोई टेंशन में आ टेंशन नहीं सकती है. है. मुझे एग्जैक्टली. पूरा भरोसा है माचा पे. मैं बोल रहा था सर, अपनी ब्री माचा पे. आप ऑनेस्ट रहिएगा. हमारी तो मेहमान है, हमें भी ऑनेस्ट रहना है, बट आप ऑनेस्ट रहिएगा. जो मेरी पीठ दिख रही है. लेट मी कम हियर.
Okay, और what? बातें करते रहो ना, तुम इधर उधर की बातें करो. इधर उधर की बातें वगैरह वगैरह. But tell me, what all have you put? So अभी आपने वो जो brew किया था, वो जो आपने whisk किया अब था. मैं आइस डाल रही हूँ इन almond milk. Okay, almond milk. ठीक है. And whatever you whisked here in hot water goes in. सारी Just letting you know in case you place an order after this from Brie Matcha and then decide to make it. मुझे लगता है कि कुछ समर ड्रिंक पीनी है तो स्ट्रॉबेरी माचा जरूर ट्राई करना फ्रॉम ब्री माचा. इट्स Okay. आवर बेस्ट सेलिंग माचा. ऑल्सो आवर एवरीडे माचा एंड आवर सेरेमोनियल ब्लेंड इज रियली गुड Okay? एंड आई कैन वाउच फॉर इट क्योंकि मैं ये रोज पीती हूँ. ठीक है. This is the final step, right? दिस इज द फाइनल स्टेप और माचा बनके रेडी हो गई है. ये जोरदार तालियां. Can we just divide this into two? अच्छा, we have a straw. Lovely. तुम्हें भी actually- पीना है. हाँ, मैं सोच रहा था मैं भी ट्राई कर लेता हूँ. ठीक है. हाँ. और रुको रुको मिक्स करने. Sorry. I'll mix it for you. मिक्स इट फॉर मी. So that you don't have to take any extra effort. Sir, are we ready? रुक जाओ पहले मैं ट्राई करूँ. काफी confidence. हाँ थोड़ा मीठा कम है बट पी के देखो. Honest. 8 out of 10. 8 out of 10. सबसे पहले बताइए इतनी बढ़िया रेटिंग क्या सबसे अच्छा लगा इसमें? टेस्ट तो थोड़ा अजीब है लेकिन ठीक है. अगर हेल्दी है तो 10 out of 10. हाँ हेल्दी तो है. हेल्दी तो पक्का है. मुझे लगता है कॉफी स्विच कर लो और माचा पी लो. ग्रीन टी है ना, ये ग्रीन टी है. और 2 नंबर क्यों काटे आपने? माचा इज पाउडर्ड ग्रीन टी. सॉरी, 2 नंबर क्यों काटे सर? फर्स्ट टाइम था, थोड़ा अजीब लगा. तो आपने उनके नंबर काट दिए. देखो दोस्तों, फर्स्ट टाइम माचा पीकर यही रिएक्शन होता है. फिर जो सब अपने लगे रहते हैं ना, मैंने बहुत लोगों को कन्वर्ट किया. आई नो हाउ पीपल आर. और तुम? मैं अब पीने वाला हूँ. आई एम रेडी गाइस. Thank you sir, thank you very much. Please give it up Thank you, sir. for him for being such a sport. Thank you very much sir. बहुत बहुत शुक्रिया. And of course we'll see him on the stage in a short मैं while from बैठूंगी now. कैसे? छोड़ो हम खड़े होकर ये इंटरव्यू Wait. कर लेंगे. Can somebody please clear this while we do this tasting session here? Okay, so I've had matcha before, just हाँ. once, Sania, as I said. हाँ. But of course, वो मेरा पहला और आखिरी बार था. हाँ. और इस बार हमारे जो मेहमान आए हैं, उन्होंने बना के दिया, तो I'm sure ये अच्छी ही होगी. सर ने 8 नंबर दे दिए हैं because energy. Yes. Now we are ready. सर वो चलाओ ना, दुक दुक. रियलिटी शो वाली फील आनी चाहिए थी. It's great. It's absolutely lovely. Sorry. बहुत कमाल किया. जोरदार तालियां सानिया मल्होत्रा के लिए और ब्री माचा के लिए. थैंक यू सर. सर ये रखवा दीजिएगा. आज कुछ तो टूटेगा आई थिंक बाय द एंड ऑफ इट. यार ऐसे मनुष्य वाली बातें मत करो. Talking of manhusiyat, let's talk about what Gen Zs are a lot more interested in. We are doing red flag versus green flag. You know, there are a lot of people who are interested in love and... Wow, I didn't expect that. A lot of people are absolutely interested in... दिल्ली वालों खाना लव. I'm telling you, बढ़ रहे हैं भाई. I'm telling you some situations. Priorities are set. I'm telling you some situations. You tell me, is that a red flag or green flag for Sanya Oh Malhotra? my god, I hate it already. Checking your partner's phone just to be sure. Green flag, red flag. Red flag. Red flag. Trust नहीं है तो they're not your partners. What wants to split the bill? Your partner wants to split the bill. हाँ कर लो कोई बात नहीं. Green flag. मतलब फर्क क्या पड़ रहा है? क्या है? Green flag. Green flag. Now if he says that let's split the bill. हाँ Okay. पर एक लिमिट होती है उसकी. यार मेरे एक सेकंड मेरे बाल खराब हो गए क्या? Discusses his relationship problems with his friends. Guys, उनका है. पहले उनका जवाब ले लेते हैं फिर आपका. तो वो अपने दोस्तों से बात ना करे. नहीं, पर अगर वो जाकर वो कह रहा है कि यार उसने आज मेरे साथ ये कर दिया, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई, like that. But then they come back and you're able to solve that issue together. Oh wow. Then it's okay. I like that. You should like you can get other people's perspective. अब relationship में ठीक है भाई. रिलेशनशिप में थोड़ी ना आइसोलेट कर लेगी हम और हम दोनों के अलावा कोई है ही नहीं हमारे बीच. कोई बात नहीं, लड़ाई हो गई, बता दिया दोस्तों को.
And then he says, "You're not like other girls." Red flag. A big red sari. What do you mean by I'm not like other girls? Yeah. Get out. Bahar nikal. Doesn't check in with you after you've said you're okay thrice. But of course, you were going to tell the fourth time what was not okay. To be honest, I consider myself to be a really good communicator. So I don't wait for them to ask me 5, 4, 6, 7, 8 times. If I'm okay, I'll tell them I'm not okay anytime. Or I'm not okay. देख ये मेरी problems है. Yeah, I don't expect my partner to read my mind. Because of course, mind reader तो कोई नहीं है. किसी को पता नहीं चलता. सब अपनी लाइफ में बिजी है. सबकी लाइफ में खुद के बारे में सोचने को बहुत कुछ है. Right. This is the end of this segment, but I have एक इससे मिलता जुलता question कि you are an actress, of course you do much more than that as well. You're an entrepreneur as well. You're a dancer as well. One profession you would not date. Not at all. And be careful while you reply. One profession, हाँ? Lawyer. तुम लोग लॉ पढ़ रहे हो क्या? बस. लग ही है. नहीं but उनका जवाब जान लेते हैं. And why I said it's important because you know usually this question is asked from a lot of. मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी. क्यों बोलूँ मैं ये सब? क्या पता वही मेरे पत्ते आके लग जाए. क्योंकि वही मैं बोलने वाला था. Because ये बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ. जितने भी एक्ट्रेसेस के ये इंटरव्यू देखे उनको वही That's what I was gonna say. Please watch out for your answer because जो हीरोइन अपने इंटरव्यू में बोलती है मुझे ये प्रोफेशन नहीं चाहिए. I would like to skip this question. Okay. Never say never. Never say never. Lovely. Now we come back to your profession, Sanya. You know, we loved your dance video with Diljit Dosanjh. She absolutely nailed it, right? Thank you. And of course, that led to such a big trend on Instagram. What was your experience with Diljit? Of course, it's a very plain Jane question, obvious question. Sorry for that. But I really want to know what happened when both of you collaborated. What was the energy and synergy like? So before we did that music video, I did an ad with him. And he entered and told me, आपने ना मेरे गाने पे एक डांस रील करी थी और वो गाना हिट हो गया. Now in my mind I was like, गाना हिट हो गया तो सर आप म्यूजिक वीडियो क्यों नहीं कर लेते मेरे साथ? सिर्फ रील ही क्यों? But that of course I didn't tell him that. I said thank you so much sir, thank you. And फिर हमने ऐड करी, हम घर चले गए and after a few weeks I got this opportunity. He said I have a song and if I would like to do the music video with him. This was perfect because I absolutely love his music and I love dancing to it. क्योंकि मैं कोई भी नया गाना आता है दिलजीत जी का तो मैं उस पर रील बनाती हूँ और डाल देती हूँ. Never अब कभी सोचा नहीं कि वो that would open up an opportunity to do a music video with him, which was we shot that music video in one day. The choreography is by Yash, amazing. I danced on heels for the first time ever. And I absolutely loved it. मजे आ गए. Lovely. And since you're talking about dancing, you know what's coming next, right? क्या? Can we get the music, guys? Can you teach us like one move, Sanya? नहीं नाचूंगी. Guys, you have to say it together. Dance, 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 dance. Okay. सब मुझे कॉन्क्लेव बुला. अच्छा ये क्यों हम दिलजीत वाला गाना क्यों नहीं चला? और राइट्स नहीं है हमारे पास. We had this rights for this one. कैटवॉक वाली बेबी है तेरी चाल, बैकलेस सूट विच लगदी कमाल. ओ किथे चली जांदी है, ओ किथे चली जांदी है. तेनू पुछना है इको ही सवाल, ओ दस दे कुवारियां है किस दे तू नाल. क्यों दूरों दूरों जानी है, जान कट जानी है. एने भी नखरे तू कर ना सोनिए, एने भी नखरे तू कर ना सोनिए. दिल मेरा तेरे लिए धड़के नहीं. आज फिर किथे, आज फिर किथे, आज फिर किथे चलनी है मोरनी बन के, मोरनी बन के. आज फिर किथे चलनी है मोरनी बन के, मोरनी बन के. संडे तो लेके सैटरडे तक, संडे तो लेके सैटरडे. Thank you. Wow.
सारे आप बहुत प्राउड फील नहीं करती अपने आप पे, मतलब आप सब कुछ कर लेती हैं यार. नहीं, सब तो नहीं कर सकती, but yeah, maybe. Let me ask one genre that you've not touched and you really want to do it. I mean, आपकी I'm already filmography. doing that. Huh? Thriller. Thriller you had not touched, and this is something that we'll see very soon. Yes. हा लवली. बट अब एक बार ऑफ कोर्स इससे पहले हम जब जर्नी की बात कर रहे थे, आपने जब 2016 में स्टार्ट किया और आज बहुत सारी चीजें जो है वो बदल चुकी हैं. बट व्हाट वाज दैट वन मोमेंट व्हिच यू नो रियली डिफाइंड द करियर, और लेट्स से एडेड द कर्व, वेयर यू फेल्ट ओके हवा बदलेगी, लाइक थिंग्स विल चेंज? Any one moment where you experienced that, okay? Before Dangal? No, through the journey. You saw something, some development in your career, in profession, and you saw that you said, okay, sure, things will change, hawa badlegi. Things would change in my career. Yeah, in profession, in my this profession. industry. Mrs. के बाद Yeah. 9 साल लग गए. पर मिसेस के बाद ऐसा लगा कि या नाउ आई थिंक आई डोंट नो, इट गिव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. कितनों ने मिसेस देखी है? वाह और ऊंचा हाथ अगर बहुत पसंद की है. वाह, Give it up for Mrs. as well, and thanks for portraying that character, Sanya. थैंक यू. Did that as a woman, did that kind of give you a reality check, because it's a reality of a lot of people? Did Yeah. that hit you, or did that give you a sad and bitter feeling that, oh, this is the reality of so many women? I do feel it moves me whenever I meet a woman and she tells me that this is my story, I've been through it, or I'm going through it. I don't want anyone to relate to that part of Richa's life. But it really makes me happy, because as an audience, when I see a character on screen that I can relate to, that resonates, it just makes you feel seen and important, right? And Richa was, it was such a character. Like, women saw themselves in her and related a lot with her journey. I hope it has inspired a lot of women. Right. My last question, and before that, you can also prepare your question. We'll take just one audience question. Man, my question would be, what would you tell 2016 wali Sanya, if you had to give a message from 2026 to that 2016 wali Sanya Malhotra? Yesterday, I thought about this, and I thought I would not tell her anything. I'm so proud of my 2016 self. I'm so proud of my past self. I have no advice for her. कोई बात नहीं, तू कर ले गलतियाँ, तुझे जो करनी है, जो गलतियाँ करी तूने, आज तू सीखी है, and you have come a really long way, और उन्हीं गलतियों से सीख कर आयो. So if I give her an advice and I'll tell her, skip this, don't do that, I don't know, I might be snatching an opportunity from her to learn something new. So I have no advice for my 2016 self. Okay, we'll take that as a message. I'm sorry I committed for an audience question, but I'm told we are absolutely out of time. We've run out of our time. So sadly, we'll have to end this session here, but it was so enlightening, so Thank you. energetic. I'm quite sad. I don't want to go. But I have to. Same. We can't let you go. Before she goes, okay, can we quickly take that one question, please? Very quickly. Not more than 30 seconds, ladies. Okay, I think you've got an opportunity in some other session. Can I give it to her, please? Can the mic reach? आप खड़े होके बोल दीजिए. Okay, mic पहुंच गया आपके पास. All right. Hi, first of all, good evening. Hi, good evening. Hi. So, basically, I'm a literature student, and I know how emotions play such an important role in storytelling, narration. So, I just want to ask you this quick question. What is the impact of emotionally packed scenes while you're shooting them? Is it like something cathartic, or is it something that you've turned indifferent to over the years because, obviously you're in this profession, so it does happen a lot of times? No, I'm quite empathetic. I have no boundaries. And yesterday I realized that I have no boundaries at all. Because this character that I'm playing now in Sundar Poonam, I thought that I will switch off when I'm off set and I'm not in front of the camera. And it is a really emotionally heavy character. Like, I have to think like someone that I'm not. As I said, like, I can't empathize with her because she doesn't empathize with anyone. So I didn't realize that it was, of course, when you're constantly thinking like a character, it does play with your psyche. So it's very difficult for me to be indifferent or not get
characters back home, or sometimes because you're inducing those emotions, so of course your brain doesn't know the reality. तो आप जो feed कर रहे हो, that becomes your reality. So, yeah. All right, ma'am. Thank Thank you. And lastly, you also striding into anchoring now. Yes. मतलब अब आप एंकर्स की भी नौकरी खाएंगी. Guys, yes, I am a quiz master on this Jio Hotstar show called HP Smart Champs. I did a quiz show for kids, Exciting. which was so exciting. बड़ा मजा आया. And I tell you, fun fact, guys, I'm a master manifestor. A week before that show came into my life, I was thinking, yeah, Born Vita quiz contest देख के कितना मजा आता था. कहाँ गए वो दिन? And cut to, I got that opportunity, and I latched onto it. I was like, I have to do this. Lovely. We'll watch that. We'll watch Sundar Poonam. We'll also buy Brie Matcha. जरूर. All we'll love everything that you do, Sanya. बहुत Thank शुक्रिया you. हमारे साथ. और इसी के साथ ही we've come to the end of this conversation. Give it up for Sanya Malhotra. Thank you. Thank you very much.